students, very good morning to all. We have started with our chapter number 15. Yes, very good, and I hope you people have prepared with what we people have completed, right? Dear students, we have started with type of ecosystem, natural ecosystem, artificial ecosystem. Natural ecosystem के कुछ example: forest, desert, water, that is your pond, lake, river, ocean, and many more. Example of your artificial ecosystem, इसमें क्या आएगा? Your garden, correct? Then it will be your, yes, anything else? बोलो फटाफट. Crop fields, yes, that is your agricultural field, right? These are the examples of man-made ecosystem. Then in last class, we people have discussed components of ecosystem, biotic component and abiotic component. If I am talking about biotic component, तो इसके अंदर कौन आएंगे आपके? Living organisms which are broadly classified as number 1 producers, number 2 consumers, and number 3 decomposers. Okay, if I am talking about your producers, तो यहाँ पे कौन है? Plants, right? If I am talking about your consumers, तो here comes your, yes, बोलो कौन आएंगे? Herbivores, then carnivores, है ना? फिर omnivores, yes, omnivores, and parasites are consumers. I guess in last class मैंने आपको ये नहीं बोला था. Parasites. If I am talking about parasites, then my dear students, these are those organisms, right, which causes harm to host. अब host मतलब क्या? होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में ये पैरासाइट रहे, दैट इज व्हाट आई मीन बाय होस्ट. चलो, से फॉर एग्जांपल यू पीपल आर फेमिलियर विथ मलेरिया. मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ. कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम. यस और नो? यस. तो वो जो मॉस्किटो है वो अपनी सलाइवा में, मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस, शायद आपको नाम पता हो तो, फीमेल एनाफिलिस जब वो आपको बाइट करती है तो वो उसकी सलाइवा आपके ब्लड में छोड़ जाती है. एंड दैट सलाइवा ऑफ फीमेल कंटेन्स दिस प्लाज्मोडियम. दिस प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में रहा तो आपकी जो बॉडी है वो क्या कहलाएगी? होस्ट. बोलो, क्या बोलोगे उसको आप? होस्ट बोलने वाले हो, ठीक है? एंड पैरासाइट मतलब who harms to us. Malaria is a disease, right, where you will get chill, you will get fever and many more symptoms you will get. मतलब आपको तो harm हुआ ना? Yes. So those organisms which causes harm to host, वो harmful ही होते हैं. That organisms are called as parasites and they comes under a class consumer. Why they are called as consumer? प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा? रहने वाला तो है ही है, but it obtains food from you people. It obtains food, nourishment from us. Done. And if I am talking about decomposers, तो decomposers में generally micro organisms like bacteria. फिर कौन आते हैं बच्चों? Fungi, right? Even earthworm is also decomposer, जिसको आप farmers friend भी बोलो. Dear student, here I want to taught one more important definition and that is trophic level. What is that? That is trophic level. Dear students, अगर simple definition if I want to say, then depending on food requirement, किसके डिपेंडेंट? डिपेंडिंग ऑन फूड रिक्वायरमेंट और आई कैन से फूड हैबिटेट, है ना?
organisms occupies different levels, and that is what I mean by trophic level. उसको क्या कहते हो आप? ट्रॉफिक लेवल कहते हो. ओके, चलो से फॉर एग्जाम्पल वी वेरी वेल नो दैट ऑल कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, राइट? सो बच्चों, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज ऑफ प्रोड्यूसर्स, राइट? Then who is dependent on producer? चलो बोलो, who is dependent on producer? Consumer. To be more specific, herbivores. तो इनको कहा जाता है primary consumers, right? फिर third trophic level is formed by whom? Secondary consumers. Are you people getting my point? चलो, producers जैसे कि plants I am talking about. Who directly depends on plants are primary consumers, or you can say it as herbivores. जो herbivores को खाए उसको आप क्या बोलोगे? Yes, carnivores. And who, if there is fourth trophic level, then this is of your tertiary consumer, right? It is of your tertiary consumer. एंड दैट आर योर टॉप कार्निवर्स. वो कौन होते हैं? टॉप कार्निवर्स, जैसे कि लायन है, राइट? टाइगर है. ओके, हु कैनॉट बी प्रेड, दैट फॉर्म्स योर टॉप कार्निवर्स. सो आई होप आपको ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई. Depending on food habitat, depending on food requirement, organisms are classified into different trophic level. जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे प्लांट्स है, सेकेंड स्टेप पे हार्बीवर्स, थर्ड स्टेप पे कार्निवर्स, फोर्थ स्टेप पे टॉप कार्निवर्स. तो ये जो सीढ़ी हुई, राइट, दिस स्टेप्स आर व्हाट आई मीन बाय ट्रॉफिक लेवल. हार्बीवर्स को आप प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हो बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. कार्निवर्स आर सेड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. टॉप कार्निवर्स को आप क्या बोलो? टर्शियरी कंज्यूमर्स. एम आई क्लियर? एंड डियर स्टूडेंट्स, if I am talking about your third category, decomposer, then decomposer do not have any specific place because they are present at each level. They are present at each level. कहाँ पे रखोगे डिकम्पोजर को आप? No, you cannot place anywhere, right? Because they are present in each trophic level. Am I clear? Okay, so I hope you understood this really well. Here in today's lecture, I want to share the activities which is given in your textbook. Everyone open your textbook and see activity 15.1 and 15.2. We have to make an आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. हमको क्या क्रिएट करना है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. एंड से दैट इज योर एक्वेटिक इकोसिस्टम. क्या है ये? एक्वेटिक इकोसिस्टम है. ठीक है, चलो. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्वेटिक इकोसिस्टम, आपको घर में एक्वेरियम खड़ा करना है, तो व्हाट ऑल यू पीपल नीड? चलो बोलो, क्या चाहिए? नंबर 1 इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. Yes. Number 2 is requirement of food. Yes. Number 3 is requirement of oxygen. अच्छे से पता है ये. If we are talking about your oxygen, then we will get oxygen by using, we are using pump, oxygen pump. If we are talking about food, then this is available in market, है ना? Okay. And if we are going to keep some aquatic plants and animals, right, then this will become a self-sustained ecosystem. It will become a self-sustained ecosystem. So this is all sort of thing that is required. Water, food, then oxygen, aquatic plants and animals. Yes? Okay.
Dear students, one question is given in your activity. Why we need to clean aquarium and why not pond or lake? Right? In pond or lake, all these conditions exist, but we are not cleaning pond or lake, but we need to clean aquarium. What is the reason for the same? Can anyone say? What is the reason? Chalo, if we are talking about एक्वेरियम जो कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. एक्वेरियम क्या है बच्चों? दिस इज एक्वेरियम आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्वेरियम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट? दिस इकोसिस्टम लैक्स decomposers. This ecosystem lacks decomposers. Am I clear? So the excreta of fish, the waste product is not cleaned. वो क्लीन नहीं होती. Whereas in pond or lake there exist these bacteria and fungi जो कि decomposer है, which is going to clean up this waste product. जो ये waste product को क्या कर देता है? Clean कर देता है. Am I clear? Okay. Second question which is there, we should not keep those animal who eat other. We should not keep those animal who eat other. Simple as that. Say for example, if we are talking about predator fish मानी who eats other fish and other aquatic animals, उसको predator fish बोला जाता है. जैसे कि पर्च हो गई आपकी, सैल्मोन हो गई आपकी, नाम सुना होगा शायद आपने, पर्च, सैल्मोन, दिस आर कॉल्ड एज योर predator fish. अगर predator fish आपने अपने एक्वेरियम में डाली है तो what that predator fish is going to do is going to kill other fish. जो कील होती है उसको कहा जाता है prey fish, Prey. It is called as your prey fish. Okay. So dear student, the answer for the question which is given in your activity 15.2 is that we should not mix predator fish with prey fish. Am I clear? Otherwise, prey fish will get killed and we will have only predator fish. Am I clear? Okay. फिर if I am talking about trophic level, तो if I am talking about trophic level, right, तो if I want to write the chain, तो सबसे पहले क्या हो गया आपके aquatic plants. Yes or no? Yes. These aquatic plants are eaten up by small fishes, which in turn is taken up by large fishes. कुछ बॉक्स बना के रखा है आपकी एक्टिविटी 15.2 में. डन. एंड लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है या सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम? यस, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर इंपॉर्टेंट. डिस्टर्बेंस इन वन makes an ecosystem unstable. However, the most important organism of any ecosystem are plants. What is the reason for the same? The plants are the one who uses solar energy and makes food for organisms of other trophic level. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? प्लांट्स है. वैसे तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट वन. ओके. So dear students, in this video what we people have seen, we have understood your trophic level, we have understood your activity 15.1 and 15.2 of our NCERT textbook. Please read it once and understand that very carefully. ठीक है? Thank you very much.